including fraction, a life survive after age x years, right? So class, that is one of the reason tx is known as continuous random variable, because it measures exact number of years a life survive. Like example class, if I say a life age 40 died at 50 years 3 months, so what is my t40 equivalent to? So my t40 is equivalent to 10.25 years. Fine. So we are including this fraction part class. Whereas class इसी का अगर मैं k40 की बात करूंगा, so this is equivalent to 10, because if you remember k, हमने k को क्या बोला था? It is complete number of years a life survive. So 40 से लेकर 50 तक complete years life में survive किए. So how many complete years are there? There are 10 years. Fine class. So k40 is equivalent to 10 class. Fine. Now if you talk about this tx random variable, it can take any value t belongs to 0 to infinity, because this is a continuous random variable class. Fine. Now class continuous random variable है, so let's talk about the CDF of this. This is cumulative density function. अगर हम बात करें इसकी capital fxt, so this is my probability of tx less than equal to t. class continuous के अंदर probability of tx. Fine. Now class continuous random variable है, so let's talk about the CDF of this. This is cumulative density function. अगर हम बात करें इसकी capital fxt, so this is my probability of tx less than equal to t. class continuous के अंदर probability of tx less than equal to or tx less than t, one and the same thing, right? class continuous के अंदर probability of tx less than equal to or tx less than t, one and the same thing, right? So this means a life age x survive less than t years, so that means this is equivalent to tqx, कि life die within next t years. So this is what probability of life survive less than t years, और survive less than t years का मतलब क्या हो गया class? That means life died within t years. Fine. Similarly class, we have survival function sxt. So this is survival क्यों? क्योंकि this is probability of tx greater than equal to t, right? This means a life age x survive at least t years, so that is equivalent to what? tpx. Fine class. So class, let's see one question from your past year papers. This is September 2008 question. This is September 2008 question class. So what it says, calculate the nearest integer, the lower quartile of the complete future lifetime of person 25 exact, who is subject to the mortality according to ELT15 female, right? So class, हमें lower quartile निकालना है. Now in CT CS1 we have seen probability of x less than x is 0.25. This is my lower quartile. If question says median, so we have 0.5. This is my median. And third quartile या upper quartile की बात करेगा, so this is my upper quartile. Fine. So remember this, especially the students who have not done CS1 उनके लिए. Fine. So class, हमें क्या निकालना है? Lower quartile for complete lifetime random variable. So complete lifetime random variable is px, right? Less than t. This is equivalent to 0.25. Right class? Now, what is the meaning of this? This means a life died within next 3 years. So can I say this is TQ25 is equal to 0.25? Right class? We can write this as TP25 is equal to 0.75. Why? 1 minus TQX is what? TPX. Right? So minus 1 यहाँ कर दिया मैंने. TPX class कैसे लिख सकते हैं हम? What is this my? This TPX can be written as L25 plus T divided by L25
is equal to 0.75, right class? So L25 plus T is equal to 0.75 L25, right? Now L25 की वैल्यू क्लास एक्चुअल टेबल में आप देख सकते हैं. So L25 plus T is equal to 0.75. So class we get 98797. Fine. So class when you solve this L25 plus T, इसको मल्टीप्लाई करेंगे we get 74097.75. Fine. So class we get this. अब क्लास हमें इसको चेक करना है एक्चुअल टेबल में किस वैल्यू के लिए हमें ये वैल्यू मिल रही है. तो लेट्स टेक. So class this is my ELT15 table. So we have already find L25. Now we have to find the closest value to this. So if you check the closest value class, so we get 73 and 74. Plus at 73 we have 74287 and 74 we have 72048. मतलब अगर क्लास हम क्लोजेस्ट की बात करें, क्लोजेस्ट इज 73, राइट? ये इसके ज्यादा क्लोज है. उसने नियरेस्ट इंटीजर की बात की है क्लास, अदरवाइज वी हैव टू डू द इंटरपोलेशन. तो क्लास 25 प्लस टी is equal to 73 and t is equal to 48. So this is my answer class. Fine. Any problem class? So in this way they can ask a question on complete future lifetime random variable. Fine. Plus next term is force of mortality or transition rate. What is the meaning of this class? Class इसका मतलब ये है कि अगर आज एक बंदा हेल्दी है, अलाइव है, हेल्दी है या अलाइव है, बेटर वर्ड इज अलाइव, कल वो डाई कर जाता है, राइट? तो जिस रेट से वो डाई करता है दैट रेट इज गिवन बाय म्यू एक्स. फाइन. तो क्लास म्यू एक्स इज द रेट ऑफ डेथ, यू कैन से दैट. और म्यू एक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज एनुअल रेट ऑफ डाइंग per person alive, annual rate of dying per person alive at exact age x years. फाइन. और क्लास इसका फॉर्मूला है म्यू एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यू एक्स डिवाइडेड बाय h. फाइन. एनी प्रॉब्लम? तो क्लास म्यू एक्स को हम फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी बोलते हैं और h क्यू एक्स को हम इनिशियल रेट ऑफ मोर्टेलिटी बोलते हैं. दैट इज अनदर नेम ऑफ h क्यू एक्स. फाइन क्लास. इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ मोर्टेलिटी भी कई जगह वो यूज करता है. तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला क्लास, म्यू एक्स इज व्हाट? लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यू एक्स बाय h. कहां से आया, क्यों आया, दैट इज नॉट एट ऑल पार्ट ऑफ योर करिकुलम क्लास. फाइन. और क्लास इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, म्यू एक्स इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h क्यू एक्स को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ tx लेस देन h होल डिवाइडेड बाय h. अब इसको ये भी लिख सकते हैं क्लास, क्योंकि अभी हमने देखा व्हाट इज h क्यू एक्स. t क्यू एक्स क्या था? प्लस t क्यू एक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ tx लेस देन t. अब t की जगह यहां पर क्या है? h. तो फाइन. और क्लास डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कहां हमें एच क्यू एक्स यूज करना है, कहां म्यू एक्स? प्लस जब भी एक बड़े टाइम इंटरवल में प्रोबेबिलिटी की बात करें वी यूज टी क्यू एक्स. म्यू एक्स तभी यूज होगा जब हम एक छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, से एक्स प्लस टी से डेल्टा टी. ये टी से डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं? म्यू एक्स क्लास, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी क्लास. फाइन. सो रिमेंबर दिस डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स. क्लियर क्लास? इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी में क्लास. फाइन. तो क्लास नेक्स्ट इज, अभी हमने पहले सीडीएफ देखा है, वी हैव ऑलरेडी सीन द सीडीएफ ऑफ कैपिटल एफ एक्स टी. दिस इज इक्वल टू टी क्यू एक्स and survival function sxt we have seen this is tpx. fine. plus continuous random variable की जब भी हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. हमें पीडीएफ भी पता होना चाहिए, राइट? तो क्लास इसका जो पीडीएफ है दैट इज गिवन बाय एफ एक्स टी या एफ एक्स एफ टी. अब क्लास इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसका डेरिवेशन आप CS2 में लर्न करेंगे. प्लस ऑल्दो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी एट वन पॉइंट इज इक्वल, बट अगर हम पीडीएफ की डेफिनेशन ये लेके चलें प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एक्स इक्वल टू टी, इसका मतलब क्या है? सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं क्लास. दिस मींस लाइफ एज x इज सर्वाइविंग टिल x प्लस t, राइट? tx इज द नंबर ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स फॉर लाइफ फॉर विच लाइफ सर्वाइव. तो लाइफ एज x सर्वाइव नेक्स्ट 3 इयर्स एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट लाइफ विल डाई, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव डन, राइट? तो x से लेकर x प्लस t तक सर्वाइव करेगा, इसका फॉर्मूला क्या है? tpx. और अभी मैंने बताया जब छोटे से इंटरवल की बात करेंगे तो विल यूज व्हाट? म्यू. सो दिस इज म्यू x प्लस t. So class, this is my PDF, TPX, mu x plus t. This is my PDF. Fine class? Any problem? अब क्लास यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमने CDF का फॉर्मूला किया था, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ TX लेस देन t, राइट? अब इसमें अगर हम क्लास CS1 लगाएं, CS1 के अकॉर्डिंग क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू t fxt dt. Any problem?
अब क्लास यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है। हमने CDF का फॉर्मूला किया था, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ TX लेस देन T, राइट। अब इसमें अगर हम क्लास CS1 लगाएं, CS1 के अकॉर्डिंग क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू T fxt dt, यही लिखूंगा मैं। एंड व्हाट इज fxt, वी फाउंड tpx mu x plus t, so this is 0 to T tpx mu x plus t dt, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ tx लेस देन t क्या है, tqx। सो क्लास दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। My tqx can be written as what? Integration 0 to t tpx mu x plus t dt. और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड बेटर, इट इज इंटीग्रेशन 0 to t spx mu x plus s ds, एक ही बात। अकॉर्डिंग फॉर्मूला किया था माई PDF। फाइन क्लास, एनी प्रॉब्लम? अब क्लास यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है। हमने CDF का फॉर्मूला किया था, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ TX लेस देन T, राइट। अब इसमें अगर हम क्लास CS1 लगाएं, CS1 के अकॉर्डिंग क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू T fxt dt, यही लिखूंगा मैं। एंड व्हाट इज fxt, वी फाउंड tpx mu x plus t, so this is 0 to T tpx mu x plus t dt, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ tx लेस देन t क्या है, tqx। सो क्लास दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। My tqx can be written as what? Integration 0 to t tpx mu x plus t dt. और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड बेटर, इट इज इंटीग्रेशन 0 to t spx mu x plus s ds, एक ही बात। तो क्लास इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूं, tqx का मतलब क्या है, लाइफ एज x विल डाई बिटवीन x to x plus t, राइट। कि लाइफ एज x और x plus t के बीच में डाई कर जाएगी। और देर आर इनफाइनाइट पॉइंट क्लास, जहां मतलब x से लेकर x प्लस टी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है जहां पर x डाई कर सकता है, राइट। तो हमने बोला लाइफ एज x प्लस एस तक जिंदा है, SPX। नेक्स्ट मोमेंट में लाइफ डाई कर जाएगा, राइट। इसके बीच में डाई कर जाएगा, दैट इज म्यू एक्स प्लस एस। और ये जो s है वो वेरी कर रहा है कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर t तक। तो देर आर इनफाइनाइट पॉइंट जहां पर वो डाई कर सकता है, उसका मैंने सबका क्या कर दिया, सम कर दिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, TQX। फाइन। तो क्लास रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ TQX ऑल्सो। विल यूज स्पेशली दिस फॉर्मूला व्हेन वी डू क्वेश्चन 22 चैप्टर 23 एंड 25, वहां पर बहुत यूज होने वाला है क्लास ये फॉर्मूला। फाइन, एनी प्रॉब्लम? तो क्लास हमने ऑलरेडी देखा है TPX को एक्चुअल टेबल से निकालने के लिए वी हैव सीन LX प्लस T डिवाइडेड बाय LX, राइट। So this is a formula which we have already seen. But class, what happen if we have given the force of mortality? अगर हमें force of mortality given है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो क्लास force of mortality अगर given है तो how to find TPX? Let's prove it. So TPX is e to power minus 0 to t mu x plus t dt. Prove this, class. Fine. So let's first prove this. So let's prove this. The proof of this. So class, we know the relation between PDF and CDF from CS1. D by dt of capital FXT give the PDF, right? Now class, capital FXT we have seen this is equivalent to TQX, right? And just I told you the PDF
So let's first prove this. Okay, let's prove this. The proof of this. Now class, we know the relation between PDF and CDF from CS1. D by dt of capital FXT give the PDF, right? Now class, capital FXT we have seen this is equivalent to TQX, right? And just I told you the PDF of complete future life random variable is TPX mu x plus T, and this is d by dt. Can I say this is 1 minus TPX, right class? Now class, TPX mu x plus T can be written as, class, derivative of 1 is 0. So we get what? Minus d by dt of TPX, right class? So mu x plus T can be written as minus 1 by TPX d by dt of TPX. Any problem class till this point? Now class, we know that d by dt of log x is 1 by x, और अगर चेन रूल हो एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे? पहले 1 बाय एक्स स्क्वायर फिर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे. तो सेम सिनेरियो यहां पर भी आ रहा है, राइट? सो क्लास, तो हम क्या, डी बाय डी टी ऑफ टीपीएक्स. एनी प्रॉब्लम क्लास टिल दिस पॉइंट? Now class, we know that d by dt of log x is 1 by x, और अगर चेन रूल हो एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे? पहले 1 बाय एक्स स्क्वायर फिर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे. तो सेम सिनेरियो यहां पर भी आ रहा है, राइट? सो क्लास, कैन आई से
this is as mu x plus t is equivalent to d by dt of tpx, log tpx, sorry. Can I write or not? See class, log tpx का डेरिवेटिव करेंगे 1 by tpx, चेन रूल लगेगा तो d by dt of what? tpx. This is what we have written. Fine. अब क्लास मुझे वैल्यू चाहिए tpx की, राइट? तो मुझे डेरिवेटिव हटाना है, डेरिवेटिव हटाना है इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो लेट्स टेक अ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड फ्रॉम 0 टू t mu x plus t dt. डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा क्लास, log tpx 0 to t, right class? So we get minus 0 to t mu x plus t dt. Put t, we get log tpx only minus log 0 px. So class, what is 0 px? 0 px is 1 only and infinity px is 0. Remember this. दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या है क्लास? लाइफ एज एक्स सर्वाइव, अगर टाइम चेंज ही नहीं होगा तो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे होगा, दैट इज व्हाट 1, वो जिंदा ही होगा, 100% है. और कोई भी लाइफ इनफाइनाइट ईयर जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए ये क्या है? 0 है. तो रिमेंबर दीज टू रिजल्ट. एंड क्लास log 1 is what? 0. So this term will cancel. So we get ln tpx is minus 0 to t mu x plus t dt. राइट क्लास, वी नीड टू फाइंड tpx. हमें एक रिजल्ट मालूम है, log बेस a b is equal to c is what? a to power c is equivalent to b, right? So class, my tpx can be written as what? e to power minus 0 to t mu x plus t dt class. Fine. So this is what we have to prove. Fine. तो क्लास इसी रिजल्ट की एक कॉरलरी है, इफ force of mortality is constant. Now class, constant बोले तो what do you mean by constant? This means it is independent of age and time. Fine. तो क्लास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? tpx इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. सो आई एम सेइंग म्यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू म्यू, टाइम और एज से इंडिपेंडेंट है. तो क्लास tpx इज e टू पावर माइनस म्यू टी. लाइक क्लास जैसे हमने फोर्स ऑफ इंटरेस्ट के लिए किया था, सेम लॉजिक हम यहां लगा रहे हैं. और क्लास tqx क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस e टू पावर माइनस म्यू टी. Remember these two results. Fine.
Now class, next is let's derive expected value of tx, and we have to prove this is integration 0 to infinity tpx dt. Fine. And class, इसकी जो notation होती है that is given by e naught x. Remember. So let's derive this result. तो क्लास एक्सपेक्टेशन ऑफ tx की अगर हम बात करें, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ tx? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी रैंडम वेरिएबल एज इट इज इनटू एफ एक्स टी डी टी, एक्स इंटू एफ एक्स ही करते हैं हम क्लोज. Now class, this is integration what? 0 to infinity t into tpx mu x plus t dt. अब क्लास यहां पर t जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे. तो क्लास हमने कुछ यहां पे रिजल्ट लिखा था, tpx mu x plus t can be written as d by dt of tpx. So class, let's replace this 0 to infinity t minus d by dt of tpx dt. Right class? Now use the by parts here. This is my first function, this is my second function. Apply by parts and simplify this. Now apply class by parts. तो by parts लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? First function as it is, integration of second that is minus tpx 0 to infinity minus integration 0 to infinity derivative of first is 1 class, and integration of this minus minus plus tpx dt. Right class? So class, when you put infinity here it become infinity px, और मैंने अभी बताया था infinity px is what? 0 class. Right? तो टर्म 0 हो जाएगी. 0 into anything is what? 0. तो क्लास फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी प्लस 0 to infinity tpx dt. और क्लास मुझे यही प्रूव करना था, एंड दिस इज इक्वल टू ई नॉट एक्स. फाइन. और क्लास यहां पर भी आप एक रिमेंबर रिजल्ट, अगर आपका म्यू कांस्टेंट हो तो आप इस टीपीएक्स को किससे कन्वर्ट कर सकते हैं? ई टू पावर माइनस म्यू टी से. फाइन क्लास, एनी प्रॉब्लम? So class, let's see one question from your study material. What it says, a population is subject to a constant force of mortality. This, a very important class, constant force of mortality is given. So my mu x is 0.015. Fine. So class, first is the probability that a life age 20 dies before age 21.25. कि currently एक life age 20 है, 21.25 से पहले उसकी डेथ हो जाएगी. Right? So class, this means what? We have to find 1.25 Q20. Right? Now class, we can write this as 1 minus 1.25 P20. Right? Force of mortality constant है e to power minus 1.25 into mu 20. Right? So just substitute the value 1 minus e to power minus 1.25.015. Right? Simplify this class. So class, we get 0.18575.
फाइन। क्लास सेकेंड पार्ट देखते हैं। Now, what is second part says? The probability that a life age exactly 22.5 dies between 25 and 27. अब क्लास लाइफ एज 22.5 है, 25 और 27 के बीच में डाई कर रही है, राइट? तो ये वाला पार्ट वो सरवाइव करेगी, सो दैट मीन्स 2.5 p 22.5 2q 25, right class? So what do we get? E to power minus 2.5 into 0.015, right? And 1 minus e to power minus 0.015 into 2. Fine. When you simplify this, you get 0.028467. Fine class. तो क्लास इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। द कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ अ लाइफ फॉर अ लाइफ एज एग्जैक्टली 28। तो क्लास हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी 28 निकालना है, राइट? तो क्लास टू सिंप्लीफाई दिस इज 0 टू इंफिनिटी व्हाट, टीपी 28 dt, राइट? क्लास म्यू कांस्टेंट है,
तो 0 to infinity तो क्लास हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T28 निकालना है, राइट? तो क्लास टू सिंप्लीफाई दिस इज 0 to infinity what TP28 dt, राइट? क्लास म्यू कांस्टेंट है, तो 0 to infinity e to power minus mu t dt, राइट? क्लास इंटीग्रेशन करते हैं तो इट इज e टू पावर माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाय माइनस म्यू 0 to infinity. So class, when you put infinity, it becomes 0, and 0 minus minus plus 1 by mu. So class, this is 1 by 0.015, which is 66.67 years class. Fine class. क्लास इसी में अगर मैं फोर्थ पार्ट एक और ऐड करता हूं, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कर्टेड फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल, अगर मुझे ये भी निकालना तो कैसे करें? तो क्लास उसके लिए अगर हम देखें, इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ K28, दिस इज summation K going from 0 to infinity, not 0 to infinity, this is 1 to infinity class, right? And KP28, right? So class, when you simplify this is
1p28, 2p28, 3p28, and so on till infinity, right? So class 1p28 can be written as e to power minus mu plus e to power minus 2 mu, प्लस इसमें भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये, फाइन। प्लस दिस इज ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक को आप सॉल्व कैसे करेंगे? प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज 1 माइनस ई टू पावर माइनस, फाइन। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, क्लास वी गेट 66.16 years। तो क्लास ये रिजल्ट भी है, अगर आप दोनों का डिफरेंस देखें, दिस इज इक्वल टू कब इनटू बी 0.5। so class remember e naught x minus ex is approximately equal to 0.5. So this is a very important result. We'll prove this result, don't worry. Fine. Now class, let's check one approximate is equal to come into be 0.5. So class remember e naught x minus ex is approximately equal to 0.5. So this is a very important result. We'll prove this result, don't worry. Fine. Now class, let's check one more study material question. It says the mortality of certain population is governed by Lx is equal to 100 minus x. This is a formula. A very important, x is lying between 0 to 100. So first question is simple. We have to find 10p30, which is L40 divided by L30 plus, right? Now what is L40? When you put x की जगह पर 40, in place of x we get 40, so we get 60 as the answer. So this is 60, and similarly this is get 70. So we get answer 6 by 7. Fine class. Any problem? Now class, second part says, second is the interesting one. We have to find the value of mu 30. अब क्लास mu 30 की वैल्यू Lx से कैसे निकालेंगे? तो क्लास we have to find mu 30. So we know that Tpx is e to power minus 0 to t mu x plus t dt. Right class? Now take a log on both sides. When you take a log on both sides, we get this. Right class? Now to remove the integration class, we have to take a derivative of both sides. So take a derivative of both sides. So d by dt of both minus mu 30 की वैल्यू Lx से कैसे निकालेंगे? तो class we have to find mu 30. So we know that Tpx is e to power minus 0 to t mu x plus t dt. Right class? Now take a log on both sides. When you take a log on both sides, we get this. Right class? Now to remove the integration class, we have to take a derivative of both sides. So take a derivative of both sides. So d by dt of ln Tpx is minus mu x plus t dt. Sorry, not dt. dt will cancel. Sorry. Fine. Any problem? So class mu x plus t can be written as d by minus d by dt of ln Tpx is lx plus t
divided by Lx, right class? So mu x plus t is minus d by dt of, we can write this as ln Lx plus t minus ln Lx. Any problem class? Now तो क्लास इसके अंदर कोई भी t की टर्म नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव तो वैसे ही जीरो हो जाएगा आपका. तो क्लास वी लेफ्ट विद म्यू एक्स प्लस टी is minus d by dt of ln x plus t, right class? So mu 30 plus t is minus d by dt of ln, what is lx plus t become class? 100 minus x plus t, right class? To simplify this, we get mu 30 plus t is what? When you take a derivative, it is 1 by 1 by 100 minus x plus, sorry, this is 100 x minus t only class. Fine. Now class, when you take a derivative, it is mu 30 plus t is what? Minus 1 by 100 minus x minus t, right? And chain rule के according minus 1 again t के respect में कर रहे हैं. तो क्लास वी नीड ओनली म्यू 30, तो म्यू 30 t को जीरो डालेंगे तो इट इज 1 बाय 100 minus 30 which is 1 by 70. So this is your answer class. Fine class. Now class, next is probability of t30 less than 20. That means life age 30 will die within next 20 years. So that is 20q30 class. Fine. Which we can write 1 minus 20p30, which is 1 minus L50 divided by L30. Fine. So substitute the value, you will get the answer. Fine. And similarly, this means what? With for next 20 years, a life is surviving, and within 1 year, the life will. You have given the Lx function, you can solve this. Fine. So most important one is this mu 30. This is interesting one. Fine class. Class, next is relation between E naught x and Ex, and I already told you, basically in short we can say we have to prove E naught x minus Ex, this is approximately 0.5. So let's prove this result. तो क्लास हमने ऑलरेडी देखा है Tx का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू करें तो हमें Kx मिलता है. क्लास दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, कि अगर मेरा Tx 40.25 है तो Kx will be 40, right? This means the life age x will die exactly at x plus 40.25, और इसका मतलब क्या है कि वो 40 और 41 के बीच में डाई करेगा. तो क्लास हमारा Tx is always greater than Kx, right? एंड अगर मैं इन दोनों रैंडम वेरिएबल का डिफरेंस करूंगा तो वो भी अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल आएगा, राइट? एंड दिस रैंडम वेरिएबल, लेट अस से इट्स बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 1 ओनली, क्योंकि क्लास एक्स्ट्रा क्या होगा Tx और Kx में, ये फ्रैक्शन पार्ट, and that fraction part is lie between what? 0 to 1 only, right? Now class, take a expectation on both sides. So what do you get? Jx, right? So class, this is my E naught x, this is my Ex, this is approximately equal to, class, it can take any value from 0 to 1, right? So
कुछ भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में ले सकता है, तो ऑन एन एवरेज क्या लेगा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. So class, remember this result as well as derivation. Fine. So class, let's solve one more question from your past year papers. It says we have to find 20p40 and we have given tpx formula. So this is a direct question. Tp, this is 1 minus 20 by 70 raised to power half. You will get the answer. Fine class. But class, इसका जो second part है, that is interesting one. Now we have to find 20p60 class. क्लास जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है वो TP40 का दिया हुआ है, तो यू कांट डायरेक्टली पुट द वैल्यू हियर, राइट. तो क्लास हमें क्या चाहिए, वी नीड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ ए 60 विल सर्वाइव टिल 80, राइट. तो क्लास हमें जो फॉर्मूला गिवन है वो 40 से दिया हुआ है, राइट. तो लेट्स अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. सो दिस सेज व्हाट, यहां से लेकर यहां तक की सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या है, 20p40 क्लास, राइट. और यहां से यहां तक का क्या है, इट इज 20p60, right, and in between this it is what, 40p40 class, right. So class, 40p40 can be written as 20p40 and 20p60, right. So 20p60 can be written as what, 40p40 divided by 20p40 class, right class. Now दोनों चीजें 40 से हो गई हैं. Apply the formula now. It is 1 minus 40 by 70 raised to power half divided by 1 minus 20 by 70 raised to power half. Solve this class. Fine. Now, next part class, we need to find expected value of T60 similarly. Now class, इसमें दो चीजें देखने वाली है. हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन TP60 dt. क्लास बाय डिफॉल्ट हम 0 टू इन्फिनिटी लिखते हैं यहां पर, बट यहां पर जो फंक्शन गिवन है TPX का वो 0 टू 70 है. मतलब क्या है कि 40 वाला मैक्स टू मैक्स कितना जिंदा रह सकता है, 70 मोर ईयर्स, दैट इज 110, राइट क्लास. तो जो इसका एवरेज आउट आएगा वो भी तो 40 और 110 के बीच में आएगा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, राइट. तो क्लास करंट एज 60 है, तो 60 वाला मैक्सिमम कितना जिंदा रह सकता है, 110. तो दैट मींस जो यहां पर लिमिट आएगी वो 0 टू 50 आएगी क्लास, नॉट 0 टू इंफिनिटी. द मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्लास स्टूडेंट डू, रिमेंबर यहां पर ये एक्स्ट्रा फंक्शन दिया हुआ है, इसीलिए लिमिट क्या हो गई आपकी 0 टू 50, बिकॉज दिस 40 विल सर्वाइव मैक्सिमम 110. 40 टू 70 मींस 110 ईयर्स, और करेंटली ये 60 है, तो 60 वाला भी मैक्सिमम 110 ही जिंदा रह सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन. फाइन. सिमिलरली क्लास, अगेन वी हैव अ प्रॉब्लम कि 60 से 60 प्लस टी की बात कर रहे हैं, और हमें एज कहां से दी हुई है, 40 से, राइट. तो अगेन सेम लॉजिक यूज करते हैं, 20p40 क्लास एंड दिस इज व्हाट, TP60, राइट. और इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 40, दिस माइनस दिस इज 20 प्लस p, राइट क्लास. तो TP60 कैन बी रिटन एज, एंड दिस हमें
maximum 110, 40 to 70 means 110 years, और currently एज 60 है तो 60 वाला भी maximum 110 ही जिंदा रह सकता है according to the given function. Fine. Now similarly class, again we have a problem कि 60 से 60 plus t की बात कर रहे हैं और हमें एज कहां से दी हुई है 40 से, राइट? तो अगेन सेम लॉजिक यूज करते हैं, 20p40 क्लास एंड दिस इज व्हाट tp60, राइट? और इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 40, दिस माइनस दिस इज 20 प्लस p, राइट क्लास? तो tp60 can be written as 20 plus tp40 divided by 20p40, right class? So let's substitute this. So we get 0 to 50, 20 plus tp40 divided by tp40 dt, right class? Now substitute the value of the function. So we get integration 0 to 50, 1 minus 20 plus t by 70 raised to power half divided by, sorry, this is 20. Fine. So 1 minus 20 by 70 raised to power half dt, right class? So class, when you simplify this, class 0 to 50, 70 raised to power half, 70 raised to power half कैंसिल हो जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा क्लास, 70 minus 20 minus t raised to power half whole divided by 70 minus 20 raised to power half dt class. फाइन. तो क्लास ये बाहर आ जाएगा, तो 1 by 50 raised to power half, 50 minus t raised to power half, क्लास इंटीग्रेशन करेंगे तो 50 minus t raised to power 3 by 2 divided by minus 3 by 2, chain rule के अकॉर्डिंग क्लास 0 to 50. फाइन. So class 1 by 50 raised to power half, when you put 50 it is 0, when you put 0 it is what, minus minus plus 2 by 3, 50 raised to power 3 by 2. Fine class. So we get 2 by 3, half half minus करेंगे, right? So you will get what, 1. So this is 50. So class, when you solve this you will get 33.34 years. Fine. This is your answer.